अच्छी सब पठेले जहाँ अच्छी सब पठेले तोर गुरुवार और शुक्रवार सॉरी शुक्रवार और शनिवार जो क्लास अच्छी से दीटा क्लास डाउट क्लियरिंग क्लास रखा है वीक रे से दीटा वीक रो क्लास पे तोर जहाँ जहाँ डाउट अच्छी तब फोटो भलसे उठे पठा बंका टेंगा करी फोटो उठे भलसे फोटो उठा ओके पीडीएफ बनेगी ना पठे यस सर पीडीएफ बनेबू गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग पिला माने प्रीवियस क्लास रे बोधे हमें फ्री एनर्जी जो स्टार्ट करथिले Yes, यस sir. सर ओके जॉइन कर जंदो रेडी जॉइन कर जंदो स्टार्ट तमरो होल बोधे चैप्टर सब तक एग्जाम हेतिला बोधे रविवार दिन यस सर Yes, sir. यस सर कार अधिक मार्क आसला सबटू ब्रजेश्वर बोधे यस सर वेरी गुड बेटा वेरी गुड डेवलपमेंट ओके समस्त भलो करथिलो म देखो जी केमिस्ट्री केमती कोन हला इंडिविजुअल सब्जेक्ट रो मार्क केते कोन अछि केमिस्ट्री केतरा क्वेश्चन पड़थिला केते मार्क अछि सर सेमिसा पढ़ने सर पूरा मिसिंग मुसाय पढ़छि कोर्स जे माने केतरा तो पढु तो फिजिक्स रो एतिकिटा बायोलॉजी रो एतिकिटा केमिस्ट्री रो एतिकिटा नहीं सर सेमी तो सर नहीं अच्छा एकादा मिसा 70टा क्वेश्चन आछ यस सर माने एमती किछि नै जे पर्टिकुलर प्रोपोर्शन ने किछि क्वेश्चन आसुनी नहीं सर एका 70 क्वेश्चन पढ़थला हां माने मिसी मासी की सब 70 टा क्वेश्चन पढुची सेतरे Yes, sir. केमिस्ट्री भी 10 टा ही पारे कि केमिस्ट्री भी 30 टा ही पारे जहां ताको Yes, sir. इच्छा Yes, Yes, sir. sir. अच्छा अच्छा मुते नॉलेज नै मोर एग्जाम केमती कोन होचे तो ऑनलाइन क्लास रे मु जाननी केमती कोन एग्जाम सन करूछंती तो जल्दी करूछु बेटर हो तो मन ना ऑक्सीजन ऊपर 4-5 टा क्वेश्चन पढ़ला ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सर बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस O2 प्लस ऐसा जो कहतला अपन सीधा तो क्लास Yes, sir. क्लास रे तो डिस्कशन कर देथिली हो Yes, ओके क्लास रे ताको डिस्कशन करके सार दिया जेतला ओके कितने जन पिला जॉइन करले ओके सो वी विल स्टार्ट नाउ ओके पिला माने प्रीवियस क्लास रे हमर फ्री एनर्जी ऊपर हमर डिस्कशन सरितला नहीं ओके Yes, sir. ये just I am going to your waiting list and जहाँ को पचारी you have to answer me okay so in a class be prepared for that जहाँ पढ़ा इतला previous class रे पढ़ी के आसीबो okay and I will ask Richa Simran पढ़ेडा Richa please unmute yourself okay tell me what is free energy जहाँ बुझी तो कह the proportion of energy which is required to do work. Is used to or is required to do the useful work. Do work. Okay. Yes, that is called as your free energy, or that is Free also energy. called as your gives free energy. Okay. Very good. Very good. Okay. So, what is the definition of your gives free energy? पिला माने कौन हमें बुझितले gives free energy? जदि गोटे सिस्टम को हमें किछि अमाउंट रो इनपुट दोचे से इनपुट अमाउंट ऑफ एनर्जी को किछिटा अमाउंट ऑफ एनर्जी कोन होची नष्ट हो जाउची जेतिके अमाउंट ऑफ एनर्जी को से रिटेन करी रखुची सेही एनर्जीटा हमर यूजफुल वर्क डन व्यवहार करा जाउची and that is called as your gives free energy. Okay, so you can write the definition also. Gives free energy is the thermodynamical quantity. Gives free energy is a thermodynamical quantity of a particular system. Okay, of a particular system whose decreasing value in any given process whose decreasing value in any given process will be converted to maximum possible useful work. Okay,
So this is called as your gives free energy. ए विषय हम मैंने प्रीवियस क्लास में हमारा डिस्कशन नहीं था, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. ओके, सो नाउ आई विल आस्क आउ कौन पचारिबा, एती तो लास्ट क्लास पढ़ाई थला. लेट्स स्टार्ट. समस्त जॉइन करले? 17 students still have joined. Some of the students are not joined yet. Okay, so we'll start now बच्चों. So today we will derive some mathematical relationship. Okay, free energy रो enthalpy सहित केमती relation अछि? What is the relation of your gives free energy with your enthalpy, entropy, okay, and different terms related to your gives free energy? We will discuss about that. Okay, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. So let's start. Everyone be concentrated and open your note copy and note it what I am writing on the whiteboard. See. सर हाँ कौन ला? हाँ सर मु दीटा क्लास करनथली तो कौन टिके सॉरी छी कह देबे कि सर Gives free energy है आस्ची मोरो बुझी होची. Gives free energy पढ़ाई देची, तमरा entropy पढ़ाई देची, तमरा enthalpy change विषय पढ़ाईची, internal energy change विषय पढ़ाईची, विभिन्न प्रकार इक्वेशन गुडा पढ़ाई देची, हमरा entropy रो enthalpy change रो विभिन्न mathematical term गुडा को मैं डिस्कस करीची. हमरा रिकॉर्डिंग वीडियो तमनु प्रोवाइड कराउनी की? ना सर नहीं सर. रिकॉर्डिंग वीडियो ऑफ कराई देची वर्तमान. अच्छा अच्छा ओके ठीक अछि. मैं ए जिनसोडा पढ़ी देची. ओके ए जिनसोडा कवर कराई देची. यू कैन आस्क वन ऑफ योर बैचमेट. ओके का गोटे पचार दे Yes, जे sir. लिखिदियो भलसे से he can provide you the note. He or she can Yes, provide sir. you the notes. Okay, यस it will be better for you. After the end of the chapter I will provide some ready-made notes. Okay, so you will go for it. See, so पिला माने सोच लो, मान लो मेरे पास A है, मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है A जो कि B में कन्वर्ट हो रहा है. लेट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें आप लोगों का A B में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, तो मान लो A का यहाँ पे फ्री एनर्जी है G1, यहाँ पे B का फ्री एनर्जी है G2, यहाँ पे A का एंथैल्पी है H1, यहाँ पे B का एंथैल्पी है H2, यहाँ पे A का एंट्रोपी है S1, यहाँ पे B का एंट्रोपी है S2. ओके, एंड द कंडीशन इज, कंडीशन क्या रखते हैं हम केमिस्ट्री के एवरी इक्वेशन में? कंडीशन क्या रखा जाता है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्लियर और नॉट? ओके, जस्ट 1 मिनट बच्चों. ओके, सो मो पाखरे ए रो फ्री एनर्जी रहिला G1, ए रो एंथैल्पी रहिला H1 एवं ए रो एंट्रोपी रहिला S1, B रो एठी तमरा फ्री एनर्जी रहिला G2, B रो एठी तमरा एंथैल्पी रहिला H2 एवं B रो तमरा एंट्रोपी रहिला S2. ओके, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. पिला माने केमिस्ट्री जे कोनोसी गोटे डेफिनेशन पढ़ला बेले लास्ट को तुम माने देखिबो लिखा हिते अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अरे ठीक ना नहीं? तो टेम्परेचर प्रेशर टाको कंसीडर करा जाय जे समान गोटे स्टेट फंक्शन, तो समानंग ऊपर एसो वैल्यू टिके डिपेंड करे. तो सेति पे हमें लिखबा एटी T and P should remain constant. Temperature and pressure of the system should remain constant. जो सिस्टम ने तमे एक्सपेरिमेंट करूचो बा केमिकल रिएक्शन टा कैरी आउट करूचो, ओके, जिस का सिस्टम के अंदर ये रिएक्शन को आप लोग प्रोसीड कर रहे हो, उस सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए. ओके, देन बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में हमारा इक्वेशन पढ़ा. क्या था इक्वेशन? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी? कैन एनीवन टेल मी? ब्रजेश सर प्लीज टेल मी Del what is the del yes G what is is the relation equal to between del free H energy minus and T del entropy? S. Yes, Del G is equal to del H minus T del S. ମୁଁ ଏଟା କହିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଏଟା Yes sir, କହିନଥିଲି এটা ବି ବୋଧେ. କହିଥିଲେ change in. Okay, no, I have not proved it. Yes sir କହିଥିଲେ. ମୁଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଥିଲି କହିଥିଲେ G is equal to H minus TS. Yes, sir. sir proof It was- Okay, G is equal to H ତାପରେ ଏଟା minus କହିଥିଲେ. TS. Okay, ସେଟା ମୁଁ proof କରିନଥିଲି. Okay, so G is equal to H minus TS.
ओके g टा होजी तमरा h minus ts तो पिला माने जदि मु एठी a पई तमरा फ्री एनर्जी इक्वेशन टा लिखिबी कोन हबो g1 is equal to h1 minus t into s1 सेमति जदि b पे लिखिबी कोन हबो g2 is equals to h2 minus t into s2 okay so now if I will calculate the Yes, sir. delta g जदि मु बर्तमान एठी delta g टा कैलकुलेट करे ताले कोन हबो delta g is equal to delta h minus t into delta s correct or not if I will combine both the equations here is your equation number 1 if here is your equation number 2 if I will calculate the change between them it may be from equation 1 minus equation 2 or it may be from equation 2 minus equation 1 anything it will happen but generally delta g is equals to final minus initial delta h also final minus initial delta s also final minus initial okay so delta h delta g delta s here delta s is equals to s2 minus s1 delta g is equals to g2 minus g1 delta h is equals to h2 minus h1 okay so this is the equation এই इक्वेशन टा हम माने वर्तमान विभिन्न प्रकार न्यूमेरिकल करिया पे ताकू व्यवहार करिया बुझी होची so this is the change in free energy this is the change in enthalpy and change in entropy and this is the mathematical relationship between these three terms delta g is equal to delta h minus t delta s okay बुझियला अच्छा Yes, sir. if I will say for Sir. ideal gas for ideal gas at constant temperature ओके यदि आइडियल गैस पे कांस्टेंट टेम्परेचर को हम कंसीडर करते हैं तो वहां पे डेल्टा एच इट विल बी इक्वल्स टू 0 एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल्स टू 0 टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस ओके सो what will be my equation delta g is equals to delta h minus t delta s so delta h will be 0 and delta g is equals to minus t into delta s your delta g will be equals to minus t into delta s so this is for at constant temperature for an ideal gas okay remember मन रखो पिला माने ideal gas जदि अछि constant temperature delta h will be 0 okay so delta g it is equals to minus t dot delta s clear everyone are बुझियला Yes, sir. then write down application of delta g application of delta g what is the different types of applications of delta g रा विभिन्न प्रकार application सब कोन बुझियो जी कोन सब application write down पिला माने first application लिखो decrease of the free energy is used to do the useful work okay write down decrease of free energy जोटा हमें प्रथम रो स्टेटमेंट रे डिस्कस करले जे फ्री एनर्जी टा तमरा यूजफुल वर्क रे कन्वर्ट हुए डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी is converted to decrease of the free energy is converted to useful work okay so decrease of the free energy is converted to useful work that is the first application of your delta g delta g टा जेति की कमिबो सेति की तमरा यूजफुल वर्क डन हबो बुझियो जी जेति की तमरा फ्री एनर्जी टा कमिबो सेति की तमरा यूजफुल वर्क डन हबो तम एटी लिखि परिबी वर्क डन यूजफुल जहा लिखु जी पिला माने बुझि बुझि लिखो वर्क डन यूजफुल जेति की तमरा यूजफुल वर्क डन हबो that will be equal to decrease in the free energy that means minus delta g जे तुम डिक्रीज लिखु जी सेति पय डेल्टा जी अगर गोटे माइनस लगेबी ओके so w useful is equal to minus of the delta g जदि क्वेश्चन ने तुमको फ्री एनर्जी दे देथिबो ओके पचारथिबो यूजफुल वर्क डन केते हबो then you just have to put a negative mark before the change in free energy calculate करिवो गोटे नेगेटिव साइन ते अगर लगे दबो you will get your useful work done clear everyone बुझियला कि बुझियलानी Yes, sir. Yes, sir. तो पिला माने जो del g है हमर जो पढिले बर्तन इक्वेशन टा delta g is equal to delta h minus t delta s this is called as your Gibbs Helmholtz equation write down बच्चों OUAT रे पचार थिला क्वेश्चन
theoretical question को equation Gibbs Helmholtz equation is dash पिला माने जानी थिले जे delta G is equal to delta H minus T delta S किंतु अधे पिला जानी न थिले जे एटा हमर Gibbs Helmholtz equation बोली कुआ जाय so please note down it Gibbs Helmholtz equation this is called as Gibbs Helmholtz equation okay or it is also called as Gibbs energy equation Gibbs energy equation एको हमर Gibbs energy equation बोली मध्य हुआ जाए Shweta is there Shweta mute your Yes, sir. Shweta जहां पे समझ ना आए Yes, sir. उड़िया समझते हो ना बेटा समझ में थोड़ा आता है थोड़ा उड़िया अच्छा जहां पे तुम्हें थोड़ा वो थोड़ा आता है। स्टेटमेंट हाँ जहां पे तुम्हें स्टेटमेंट समझ में ना आए थोड़ा मेरे को बोलना आई विल रिपीट दैट इन माय हिंदी ओके Yes, sir. ओके ये चीज समझ में आया Yes, sir. okay so delta G is equal to delta H minus T delta S that is called as your Gibbs Helmholtz equation and that is also called as your Gibbs energy equation okay so do work done useful it is equal to decrease in the free energy so the mathematical relationship will be W useful is equals to minus delta Z okay okay then bachcho now we will discuss a new term that is your efficiency write down efficiency what is the meaning of efficiency ए जो मु लिखी जे एटा कोन कोआ जाय this sign is called as nita कोन कोआ जाय को nita this is your efficiency of the work okay this is your efficiency of the work write down efficiency of any process जदि तुमको पचार थिबो efficiency of a process then how you have to calculate that efficiency of a process bachcho what is the meaning of efficiency can you tell me what is the meaning of efficiency what is the meaning of efficiency chemistry से तो relate करिया दरकार नहीं just go in a practical way and tell me what is the meaning of efficiency कौन बुझो जो तम माने efficiency कहले मने कर मो पाखरे गोटे मशीन अछि मो पाखरे गोटे मशीन अछि ओके लेट गोटे मो पाखरे बाइक टे अछि ओके हां बाइक कहबानी स्कूटी कहबा लेट इट इज देयर इज एक्टिवा मो पाखरे गोटे एक्टिवा अछि वर्तमान मो एक्टिवा रे मोर जति की एनर्जी इंजन मते दोउची सेति की एनर्जी मोर मोशन पई यूज होउची ना किछिटा एनर्जी अन्य एनर्जी आकार रे रेडिएट हेकी चली जाउची मोशन पे यूज होचे आ किछि चाली भी जाउछ चली जाउछ हीट एनर्जी आकार रे किछिटा रेडिएट हे जाउची साइलेंसर तमरो इंजन को छुईले गरम लागिवो दैट मींस तमरो जो इंजन ने जो एनर्जी टा आईडी प्रोड्यूस होउची दैट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ना नहीं मो मोशन करूची गाड़ी ता मोर मोशन करूची तो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट होउची गाड़ी ता मोर इंजन टा जो गरम होउची सेटा मोर हीट एनर्जी आकार रे किछिटा रेडिएट हे जाउची अरे ठीक ना नहीं किछिटा हीट एनर्जी रेडिएट हे जाउची तो पिला माने हमें कहिबा जदि हमको पचरा जाय व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द एक्टिवा इंजन ताल तमे कोन कहइबो सर मोर आउटपुट केते आसुची आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100 अरे ठीक ना नहीं Yes, sir. कार्नोट्स इंजन पढिबु तू फिजिक्स रे कार्नोट्स इंजन पढिबु कार्नोट्स इंजन रे एफिशिएंसी कैलकुलेशन पई सर माने कहिबे बुझियोची से जगह रे देखिबु सर जेतले इक्वेशन टा डेराइव करिवे आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100 करिके बाहर करा जाय तो सब बेले मन रखिबु से फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बा जे कोनसी गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल हो एफिशिएंसी माने आउटपुट बाय इनपुट 100 ओके आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 दैट मच बुझियला एटा हला हमर एफिशिएंसी कहले तम मानो एया बुझिबो सेति पय तम मानो ए जिंसटा कहिलु किंतु केमिस्ट्री हमें को केमिति बाहर करबा एफिशिएंसी जे कोनसी गोटे सिस्टम पे हमर तो एटी मशीन नै ना हमें तो एटी मशीन यूज करू ना हमें जे कोनसी गोटे केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करबा ओके तो जदि केमिकल रिएक्शन टा को गोटे सिस्टम बोली कंसीडर करा जाय इफ वी विल कंसीडर एनी केमिकल रिएक्शन एज अ सिस्टम then my efficiency of that chemical reaction will be equals to delta G divided by delta H okay efficiency is equal to delta G by delta H if you will calculate it in the percentage form then it will be delta G by delta H into 100 okay so efficiency is equals to delta G by delta H
पिला माने देखिला एटा आउटपुट बाय इनपुट हला ना नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा जी टा तमरो कोन होची यूजफुल वर्क डन को कन्वर्ट होची डेल्टा एस टा तमरो कोन टोटल हीट कंटेंट अरे ठीक ना नहीं टोटल हीट कंटेंट तमरो एंथैल्पी टा अरे डेल्टा जी टा हला तमरो आउटपुट तमरो वर्क डन केते करूचो तमे that delta g will show you the work done it will show you the output of the system delta s टा तमरो इनपुट शो करूची एटी सिस्टम रो okay so when you will calculate the efficiency simply divide your free energy change with your enthalpy change and then multiply with 100 you will calculate the percentage of efficiency of that system अरे बुझियला ना बुझियला very simple जिंस जार मुंडरे पसिलानी से केवल गोटे जिंस मन रखिवो सर कहिचंती एफिशिएंसी क्वेश्चन ने जदि मते एफिशिएंसी पचारिची मते फ्री एनर्जी कैलकुलेट करिवार अछि मते एंथैल्पी कैलकुलेट करिवार अछि ताकू 100 रे मल्टीप्लाई करि देबी मते एफिशिएंसी रा परसेंटेज मिलि जिवो जदि मते एफिशिएंसी रा परसेंटेज पचारिची ताले 100 मल्टीप्लाई करिवा जदि एफिशिएंसी सिंपल पचारिची देन डेल्टा जी बाय डेल्टा एच करके छाडी देबा अरे हां कि नहीं Yes, sir. okay so this is the thing how to calculate the your efficiency I mean numerical discussion kariba सब concept pore then at that time we will discuss some questions related to your efficiency but entrance रे efficiency ऊपर एते किछि question पचारिनी particularly तमर chemistry topic ऊपर efficiency एते पचारिनी किछि question okay so ये रहला तमर application of delta g okay next बच्चों we will discuss about your spontaneous and non spontaneous process आउ जो रिलेशन रहिला तमरो डेल्टा जी रो अन्य सब रिलेशन सेगुडा हम आगु डिस्कस करिबा but now we will discuss about what is your spontaneous and non spontaneous process then delta g रो साइन रु हमें केमिति जानिबा जे गोटे प्रोसेस मोर स्पॉन्टेनियस हबो कि गोटे प्रोसेस मोर नॉन स्पॉन्टेनियस हबो बुझी होची जदी मते डेल्टा जी दिया जाईची डेल्टा जी टा जदी पॉजिटिव हे परिबो नेगेटिव भी हे परिबो जीरो भी हे परिबो तो डेल्टा जी रो साइन कोन हेले मु कोन बुझिबी जदी डेल्टा जी टा सर मन कर मोर एटी नेगेटिव आछी ताल मु सर सेटु कोन बुझिबी डेल्टा जी टा मन करंतु मोर पॉजिटिव आछी ताल मु सेटु कोन बुझिबी तो सेही जिंसडा पई हमें वर्तमान स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को टिके डिस्कशन करिबा देन वी विल डिस्कस द साइन कन्वेंशन ऑफ योर फ्री एनर्जी चेंज ओके अरे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बदे तमन से तो मु डिस्कस करिथिली व्हाट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंट्रो हां माने सही माने टोटल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कोआइतला ना कोआइ नतला कोआइतला ओके टेल मी व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो जेटी कहला हमर कोआइतला बोली कह मते स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कोन सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ऑल नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेसेस जोटा कि इरिवर्सिबल इन नेचर अच्छा ऑल नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेसेस किछि आर्टिफिशियल प्रोसेसेस को हमें स्पॉन्टेनियस करि परिबानी सिंपली कहबू जे सर जो प्रोसेस गुडा मन को मन हबो बस इट विल ऑकर साइमल्टेनियसली विदाउट एनी एफर्ट कोनोसी एफर्ट न दे कि जो प्रोसेस टा आगु को माडी चलीबो बुझियो जी कोनोसी प्रकार ताकू किछि कहबा दरकार नै ताकू किछि तोर देबा दरकार नै से तर आपको मन को मन हबो पिलाटी मन को मन पाठ पढुची प्रोसेस टा मन को मन हबो दैट इज कॉल्ड एज योर स्पॉन्टेनियस ओके यस बुझि पालु विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी कोनोसी एक्सटर्नल एजेंसी रा हेल्प बिना जो प्रोसेस टा हबो दैट इज कॉल्ड एज योर व्हाट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अरे विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी रे जो प्रोसेस टा आगु माडी चलीबो सेटा केमति नॉन स्पॉन्टेनियस हला बाबा नहीं सर स्पॉन्टेनियस okay so that will be your spontaneous process okay non spontaneous टा कोन ता उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जो उल्टा कोन हबो तुमको एनर्जी देबा को पड़िबो इन्वेस्ट करिया को पड़िबो एनर्जी लगिया को पड़िबो ओके so that tomorrow reaction टा आगु को प्रोसीड करिवो so that type of system is called as your what non spontaneous system okay non spontaneous process that type of thing तो पिला माने डेल्टा जी रु आमने केमिति बुझिबा जे सर आपनकर एटा स्पॉन्टेनियस हबो कि नॉन स्पॉन्टेनियस हबो कि आउ कोन हबो
हम माने ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को डिस्कस करथिले एंट्रोपी केस रे सो मते या हमर अविनाश प्लीज टेल मी डेल्टा एस ता जदी यूनिवर्स रो नेगेटिव हुए ताहले मोर प्रोसेस ता स्पॉन्टेनियस हबो ना नॉन स्पॉन्टेनियस हबो ना इक्विलिब्रियम कंडीशन को आसीबो अविनाश everyone be ready I will ask any name then I will ask the question to him okay Avinash beta please tell what is the value of delta s নাই মু কোন পচারলি ডেল্টা এস টা নেগেটিভ হবো ডেল্টা এস টা যদি নেগেটিভ হুয়ে তাহলে তোর প্রসেসটা স্পন্টানিয়াস হবো না নন স্পন্টানিয়াস হবো না ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন কো আসিবো ভুলি যাইছু অবিনাশ মন রাখো না মন রাখলে কেমতে হবো বাবা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ওড়া পরা লেখে আউ থরে লেখে আউ কে কहि परिबो हमरो भुवनेश्वरी सर नेगेटिव थिले नॉन स्पॉन्टेनियस हबो नेगेटिव थिले हमरो नॉन स्पॉन्टेनियस हबो वेरी गुड ओके वेरी गुड पिला माने मन रखछन अविनाश देखिलु से केमती कहिला काई मन रखनु बाबा मन रखे अच्छा तो हमें डेल्टा एस विषय डिस्कशन करिथिले कोन डिस्कशन करिथिले डेल्टा एस टोटल जदी पॉजिटिव हुए सर आपनकर डेल्टा एस टोटल जदी पॉजिटिव हबो देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ता आपनकर स्पॉन्टेनियस हबो जदी डेल्टा एस टोटल इज योर नेगेटिव इफ डेल्टा एस टोटल यहां पे नेगेटिव हैला ताले कोन हबो द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो तमर एटी नॉन स्पॉन्टेनियस होतला ओके देन जदी मोर एटी डेल्टा एस टोटल दा 0 हैला पॉजिटिव हे परिबो नेगेटिव हे परिबो नले 0 हे परिबो then that is called as your equilibrium condition से अचीव करि दिबो बुझि होची जो इक्विलिब्रियम विषय रे हमें आगु जाय कि डिस्कशन करिवा केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम ओके तो ई तीनटा जेंसा मु तमानन को कहिथिली जे डेल्टा एस टोटल जदी पॉजिटिव हुए स्पॉन्टेनियस हबो डेल्टा एस टोटल जदी नेगेटिव हैला ताले नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल जदी 0 होती ताले इक्विलिब्रियम कंडीशन नाउ वी विल डिस्कस डेल्टा जी का साइन डेल्टा जी रो साइन कोन हले तमरो स्पॉन्टेनियस हबो कि नॉन स्पॉन्टेनियस हबो से विषय टिके डिस्कशन करिवा पिला मन देखो इफ डेल्टा जी जदी डेल्टा जी टा तमरो नेगेटिव हुए इफ डेल्टा जी इज योर नेगेटिव देन द प्रोसेस विल बी व्हाट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस उल्टा हबो डेल्टा स्टेट जा होतला डेल्टा जी टा तार उल्टा हबो सेठी डेल्टा एस टा पॉजिटिव होतला तो प्रोसेस टा इट इज स्पॉन्टेनियस होतला बट हियर द डेल्टा जी it is negative then the process will be spontaneous jodi delta g ta tamar 0 hala if delta g will be 0 then the system will be in equilibrium okay then the system will be in equilibrium jodi tamar eti delta g ta positive hala then what will happen non spontaneous process will happen delta g positive hala to tamar eti non spontaneous process hobo okay so this is the thing delta g ta jodi negative then spontaneous process delta g if it is 0 then it is equilibrium then delta g is positive is your non spontaneous पिला माने तीनटा पॉइंट को भलो भाबे मन रखिवो बारंबार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एठी से पचारुची साइन ऊपर ओके पिला माने गोटे जिंस आउटे डिस्कशन करिवा आमे जो इक्वेशन दा पढले गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन दैट इज डेल्टा g is equal to delta h minus t delta s जदी एठी मोर डेल्टा g टा नेगेटिव हबो ताले मोर प्रोसेस टा स्पॉन्टेनियस हबो तो मते एठी डिस्कशन करिवार अछि जे एंथैल्पी चेंज रो साइन कोन हबो एंट्रोपी चेंज रो साइन कोन हबो टेंपरेचर कोन हबो सो दैट मु जानिबि जे हमर प्रोसेस टा एठी स्पॉन्टेनियस होउची कि हो नाही के बुझि पालानी मु कोन कहयौ चाहूची मु डिस्कशन करिनी मु आरंभ करी वर्तमान डिस्कशन आमे जो गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमें पढिले जे डेल्टा g is equal to delta h minus t delta s आमे वर्तमान डिस्कशन करिवा जदि मो पाखरे ओटे केमिकल रिएक्शन अछि एवं तारो एंथैल्पी चेंज एवं तारो एंट्रोपी चेंज कोन हेले मोर प्रोसेस ता स्पॉन्टेनियस हेई परिबो बुझिउची डेल्टा एस ता मोर पॉजिटिव होबो कि नेगेटिव होबो कि कमिबो कि बढ़िबो टी डेल्टा एस ता बढ़िबो कमिबो कोन हेले मोर डेल्टा जी ता कोन होबो सो दैट मोर प्रोसेस ता इट स्पॉन्टेनियस होबो कि कोन हेले प्रोसेस तो मोर नॉन स्पॉन्टेनियस होबो से सब विषय वर्तमान टिके डिस्कशन करिवा अरे ठीक ना नहीं yes sir माने पॉइंट 1 देखि लेखो एठी पॉइंट 1 देखि लेखो when both delta h and t delta s is negative very important thing very important thing
when both delta h and t delta s is negative पिला माने खाता रे इक्वेशन टा को बां साइड रे एंती लिखि दियो delta g is equal to delta h minus t delta s so that examine करके तुम मते कहि परिबो पिला माने जदी delta h टा तमरो नेगेटिव हैला ओके जदी t delta s टा भी तमरो एठी नेगेटिव हैला ताले कोन होची टिके देखिलो एठी तमरो delta s टा नेगेटिव बुझो मैथमेटिक्स टा delta s टा तमरो एठी हैला नेगेटिव t delta s टा भी हैला तमरो नेगेटिव त पिला माने एठी मोर नेगेटिव नेगेटिव कोन आइ जिवो पॉजिटिव बुझी हलानी एठी t delta s टा नेगेटिव अछि बाहर नेगेटिव भीतर नेगेटिव 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 ब्रैकेट ओपन हेले पॉजिटिव होबनी Yes, sir. Yes, sir. तो मोर Yes, इक्वेशन sir. कोन आइ जिवो माइनस डेल्टा Minus s del प्लस H t plus डेल्टा T del S. ओके सो जदी तोरो डेल्टा h टा t delta s to अधिक हुए if the delta h is more than t delta s then तोर प्रोसेस टा कोन हबो माने कर एठी तोर डेल्टा s टा बडो t डेल्टा s अपेक्षा ता माने मानिने एटा तोर -3 एटा ला तोर 2 ताल तोर फाइनल आंसर कोन हबो -1 अरे ठीक ना नहीं Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली तोर आंसर टा कोन होची नेगेटिव आसुची तो नेगेटिव आसिले तोर प्रोसेस टा स्पॉन्टेनियस हबो वेरी गुड so delta s टा जदी t delta s अपेक्षा बडो हला then the process will be spontaneous delta g is equals to negative okay that process will be spontaneous process okay पिला माने जदी मोर एठी डेल्टा s टा t डेल्टा s अपेक्षा सानो हला ताहाले Positive हबो non spontaneous. वेरी गुड समस्त बुझी कहउछ तो एठी जेंति बुझेइली एई जगह जेंति बुझाला सब गुडा सेंति तमे निजे मध्ये बाहर करि पारिबो so it will be your non spontaneous okay so पिला माने जदी डेल्टा s टा तमरा इज इक्वल टू t डेल्टा s हला ताले कोन हे जिवो 0 डेल्टा g will be 0 so delta g 0 हेले equilibrium condition okay delta g 0 then your equilibrium condition okay so these are the three conditions if both delta h and t delta s will be negative here okay now पिला माने देखिबा जदी delta h and t delta s both are positive जदी दी जण जाको एटी पॉजिटिव होंती ताले कोन होबो पिला माने delta g is equals to delta h minus t delta s एठी मोर delta h ता भी पॉजिटिव एठी मोर t delta s ता भी पॉजिटिव तमरो कोन हबो सेही सेम इक्वेशन रहइबो तो जदी मो एठी कहबी जे delta s ता ग्रेटर देन t delta s माने मो एठी कहबी मोर delta s ता बडो माने कर एटा 5 एटा हला 3 तो फाइनल आंसर कोन हबो पॉजिटिव ए बडो सानो को Yes, माइनस sir. पॉजिटिव ओके so delta g will be positive here Positive. so delta g positive Non means spontaneous. delta g positive means non spontaneous process okay so if the delta h it will be less than t delta s then it is your process is spontaneous Negative. why delta g will be negative पिला निजे एटी बाहर करि परिबो एमता नंबर नै किना so delta g is equal to negative so it will be your spontaneous process if delta h is equal to t delta s कोन हबो किछि फरक पड़िबोनी सेही जीरो इक्विलिब्रियम दी जण जाको केस रे सेही सेम जिंस हबो ओके अरे Yes, बुझियो sir. कि ना नहीं अच्छा बर्तमान जदी मु कहिबी if my delta h is negative जदी delta h ता मोर नेगेटिव हबो and my t delta s is your positive जदी मोर delta h ता नेगेटिव हबो t delta s ता मोर पॉजिटिव हबो ताहाले कोन हबो बुला माने कोन हबो को जदी मोर रहिला डेल्टा g is equal to delta h minus t delta s तो एटी मोर डेल्टा s ता नेगेटिव t delta s ताला मोर पॉजिटिव तो फाइनल इक्वेशन कोन हबो माइनस डेल्टा h माइनस t delta s माइनस डेल्टा h माइनस t delta s Minus T delta तोर S. जेतेबेले तू एटा जदी मन कर डेल्टा s ता तोर 2 हैला t delta s ता तोर 3 हैला ताले कोन हबो -2 -3 केते -5 -5 negative फाइनल आंसर भी तोर से माइनस रे ही आसीबो so the reaction will be what Spontaneous. spontaneous so delta g will be negative delta g will be highly negative बहुत negative हे जीवो so the reaction will be or system will be highly spontaneous okay spontaneous हबो जदी delta s ता negative हुए आ तमरा t delta s ता जदी positive हुए ताल तमने कोन बुझिबो
जे सर रिएक्शन टा एठी स्पोंटेनियस हबो पिला माने एठु आ गोटे जिंस मध्ये जानो जदी गोटे स्पोंटेनियस प्रोसेस तुमको एंथैल्पी चेंज रो पचारुची एंथैल्पी चेंज टा कोन हेले प्रोसेस टा स्पोंटेनियस हबार चांस अधिक अछि ताल तमे कोन कहइबो जदी डेल्टा एस टा नेगेटिव हुए जदी रिएक्शन टा तमर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुए ताहले तमरो रिएक्शन टा स्पोंटेनियस हबार चांस अधिक रही बुझियला ना नहीं so it will favor the spontaneous process जदी डेल्टा एस टा नेगेटिव हुए तमरो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुए ताहले तमरो प्रोसेस टा बा तमरो सिस्टम टा रिएक्शन टा स्पोंटेनियस हबार परसेंटेज अधिक से चाहिबो मो स्पोंटेनियस हेबा पई बट देयर इज अदर फैक्टर्स डिपेंड करता ओके तो किंतु मने रखिता जनरल वे रे जदी डेल्टा एस टा नेगेटिव हुए देन इट विल फेवर द स्पोंटेनियस प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर करे स्पोंटेनियस प्रोसेस बुझियला अरे हो कि नहीं Yes, sir. Yes, sir. जदि बर्तमान मु कहबी इफ माय डेल्टा एच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव जदि मोर डेल्टा एच ता बर्तमान पॉजिटिव हबो एंड टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू नेगेटिव जदि मोर डेल्टा एच ता पॉजिटिव हला टी डेल्टा एच ता जदि नेगेटिव हला ताले पिला माने मोर डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस त मोर डेल्टा जी ता इटी कोन अछि बाहरिबो डेल्टा एच ता मोर इटी पॉजिटिव टी डेल्टा एस ता मोर इटी नेगेटिव तो पिला ने भाबिलो जदि ब्रैकेट भीतर इटी नेगेटिव आसी गला ताले इक्वेशन कोन हबो डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस ता माने एटा टोटल वैल्यू टा निश्चित भाबरे पॉजिटिव आसीबो जदि एटा मु 2 नै गली एटा प्लस 3 नेली तो ऑब्वियसली एटा प्लस ही आसीबो बुझियो पॉजिटिव क्वांटिटी आसीबो देन माय डेल्टा जी विल Yes, बी sir. हाईली पॉजिटिव जेन से इटी हाईली नेगेटिव होतला इटी हाईली पॉजिटिव हबो देन Yes. व्हाट विल बी माय प्रोसेस Highly non-spontaneous. Highly non-spontaneous. very good highly non spontaneous process okay highly non spontaneous process so this is all about कौन हमें पढ़िले डेल्टा जी नेगेटिव माने प्रोसेस स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी जीरो माने प्रोसेस इक्विलिब्रियम डेल्टा जी पॉजिटिव माने कौन हबो अरे कौन डेल्टा जी पॉजिटिव हेले Spontaneous. डेल्टा जी पॉजिटिव हेले नॉन स्पॉन्टेनियस ओके पिला माने गोटे काम करो गोटे टेबुल टे बनैलो गोटे टेबुल बनाओ न मु एटी बनैबी एटी वर्तमान मते देइची ये हमर जूम देइची बा जूम देइची व्यवहार करिया पे हम व्यवहार करूची त माने तमरो रफली गोटे खाता रे बनै दियो एमते बनाओ गोटे एटी बना दीटा एटी बना आ गोटे तीनटा एटा डी पतला करिवु सेटा डी मोटा करना ड्रा कर एटी डी स्पेस अधिक चली ओके कटिगला it's like sin of delta h एठी लेखे sin of delta s एठी लेखे sin of delta s एठी लेखे value of temperature एठी लेख तोरो spontaneity ओके पिला माने जदी मोर डेल्टा एस ता प्रथमे एठी नेगेटिव हैला इफ इट विल बी नेगेटिव then delta s तो जदी तमरो एठी मोर पॉजिटिव हैला ओके delta s तो जदी पॉजिटिव हैला then temperature at any value of the temperature से जे कोन टेंपरेचर हो the process will be कोन spontaneous process ता spontaneous होबा ना नहीं Yes, sir. okay if my delta h is positive delta s ता मोर जदी पॉजिटिव हैला ओके and my delta is also positive जदी delta s ता मध्ये मोर पॉजिटिव हैला ताले कोन हबो जदी डेल्टा एच भी पॉजिटिव डेल्टा एस भी पॉजिटिव एंड इफ द वैल्यू ऑफ टेंपरेचर इज लो जदी लो टेंपरेचर त माने करूचो ताले प्रोसेस टा कोन हो पिला माने non-spontaneous. ओके नॉन स्पॉन्टेनियस ओके पिला माने आउट जदी कहिबा एठी जदी मोर नेगेटिव हैला एठी भी जदी मोर नेगेटिव हैला ओके ई बोथ आर नेगेटिव ओके जदी दीटा जाक नेगेटिव हैला एवं मु ताको लो टेंपरेचर रे कैलकुलेट करूची ताले कोन हबो नेगेटिव लो टेंपरेचर कोन हबो Spontaneous. हबो ओके
लिखि दबा स्पॉन्टेनियस अच्छा लिखि देली स्पॉन्टेनियस अच्छा आउ कोन बाकी रहला एटा नेगेटिव हला एटा पॉजिटिव हला एटा पॉजिटिव हला एटा पॉजिटिव एटा नेगेटिव आ गोटे बाकी रहला एटा पॉजिटिव हबो एटा नेगेटिव हबो एटा पॉजिटिव हबो एटा नेगेटिव हबो कोन हो पिला माने जदि मु पॉजिटिव हला एटा जदि नेगेटिव हला देन इफ विल टेक एनी टेंपरेचर जदि तू जे कोन टेंपरेचर तो नउचू देन द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस लिखिला एति की हे गला Yes, sir. अच्छा पिला Yes, माने sir. एटा दीटा जिंस देखु छ मु एटी दीटा जगह लिखि छी लो टेंपरेचर लिखि छी तो निश्चित भाबे तार हाई Yes, sir. टेंपरेचर भी थिबो निश्चित भाबे तार हाई टेंपरेचर भी थिबो ओके Yes, sir. आउ जो दीटा प्रोसेस मु लिखिली जे डेल्टा एस ता मोर नेगेटिव डेल्टा एस ता मोर पॉजिटिव एवं मोर टेंपरेचर वैल्यू जे कोनोसी टेंपरेचर ने लो ने हाई ने जते तोर इच्छा ने प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हबो जदि तोर डेल्टा एस ता पॉजिटिव अछि डेल्टा एस ता तोर नेगेटिव हला देन टेंपरेचर जे कोनोसी वैल्यू ने सेटा तोर नॉन स्पॉन्टेनियस हबो किंतु जदि तोर डेल्टा एस ता पॉजिटिव डेल्टा एस ता मध्ये तोर पॉजिटिव एवं तोर जदि लो टेंपरेचर रे तो कंसीडर करूचू then the process will be non spontaneous equation में कौन पढ़िले delta g is equal to delta h minus t into delta s तो delta s ता तोर वेट कौन हला पॉजिटिव t delta s ता भी तोर पॉजिटिव हला ओके अच्छा पिला माने जदि टेंपरेचर जदि लो रहिला जदि एटी टेंपरेचर लो रहिला ताहाले कोन हबो एठी जो तोर t delta s रो वैल्यू ता ताले delta s टू कम हबो अरे ठीक ना नहीं मो Yes, sir. बुझेलानी तमरो डेल्टा जीटा कोन दरकार पॉजिटिव हेले नॉन स्पॉन्टेनियस हबो अरे ठीक ना नहीं डेल्टा जीटा Yes, पॉजिटिव sir. हेले नॉन स्पॉन्टेनियस हबो पिला माने एठी से कहूची डेल्टा एस ता भी पॉजिटिव टी डेल्टा एस ता भी पॉजिटिव तमरो फाइनल इक्वेशन होची डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस किंतु जदी भाबिले एठी जदी टेंपरेचर टा को अधिक निया जाए ताले टी डेल्टा एस रा वैल्यू टा बढ़ी जीवनी Yes, sir. टी डेल्टा एस रा Yes, वैल्यू टा sir. बढ़ीले मोर फाइनल आंसर टा कोन हबो Negative আছে टी एस ले तमर प्रोसेस कोन हबो Spontaneous. negative non Spontaneous. spontaneous Spontaneous. कंफ्यूज हेलु कंफ्यूज हेले तो गला ओके क्वेश्चन कला बे ट्रिक देबी केमति मन रखिया को जल्दी करि हबो ओके एबे खाली थ्योरी उडा मन रख दिए कोन पढले ताले हमें जदी हमर एठी रहिला पॉजिटिव एठी भी रहिला पॉजिटिव एवं जदी टेंपरेचर टा को हमें हाई नै गले हाई टेंपरेचर जदी हमें कंसीडर करू जे ताला हमर प्रोसेस कोन हे जिवो स्पॉन्टेनियस बुझियाला ना बुझियालानी बुझियालानी Yes, sir. yes ओके sir Yes, आ sir. गोटे कोन बाकी रहला नेगेटिव रहिबो Negative. एट हाई टेंपरेचर कोन हे जिवो प्रोसेस non spontaneous यस जेम देइटा बुझिलो सेटा भी तमा नंबर नै कि ताको बाहर करि परिबो नॉन स्पॉन्टेनियस ओके तो ये रहला तमरा टेबल ए टेबल को व्यवहार करके जो बेले तमरा क्वेश्चन पचारिबो साइन ऊपर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस यू आर एबल टू डू दैट आंसर ओके जे कोनसी क्वेश्चन पचारिबो ओके एक टेबल लो तमाने सेटो आंसर पाई परिबो नो प्रॉब्लम ठीक अछि गोटे क्वेश्चन करबा की राइट डाउन वन क्वेश्चन yes write sir down example number 1 write down enthalpy and entropy change enthalpy and entropy change enthalpy and entropy change enthalpy and entropy change of a reaction are 40.63 kilojoule into mole inverse and 108.8 joule Kelvin inverse mole inverse respectively predict the feasibility of the reaction predict the feasibility of the reaction at 27 degrees centigrade 27 degrees centigrade enthalpy and entropy change of a reaction are 40.63 kilojoule and 108.8 joule Kelvin inverse mole inverse respectively predict the feasibility of the reaction at 27 degrees centigrade means you have to find out the process will be spontaneous or non-spontaneous
feasibility अर्थ होचे रिएक्शन टा तुम्हारा spontaneous हबो कि non spontaneous हबो, you have to tell me. Go to your chat box and send me the answer as soon as possible. Very easy question, you can do it. Sir, spontaneous. Yes. कौन कहू झियो Sir, spontaneous हबो. तो आंसर बाहर कर मु आंसर कहबिनी डिस्कस करबिनी तू हमर आराम से कर जाओ बाहर तोर तो आंसर तो चैट बॉक्स रे पठा मु देखे को माने आंसर पठाउ जंदी खाली लिखि दे पॉजिटिव की नेगेटिव दैट मच पॉजिटिव की नेगेटिव ओके जियो तोर कोन हला आंसर काई पठेलु नो मो कहले कोन जानि पर के कहूची के नाही वेटिंग लिस्ट को जे देखिबी की चैट जे देखिले मु जानि परबी को जेटी कोन कहूची कोन पिलाटी कहला हमर के करूची न करूची वेरी गुड सुकन्या पहला रदस सर मु पठेई जी मु देखुची बाबा देखुची ओके व्यस्त दरकार मैं आनी पठेई दू ओके वेरी गुड why you are taking so much time do fast only 4 peoples 4 जन पिला अरे जे जो बकर हला पर चारटा पिला बुझिले की अविनाश वेरी गुड गो फॉर इट भुवनेश्वरी रिचा इप्सिता साहिल वेरी गुड अविनाश वेरी गुड बेटा अविनाश बुझी पारछु तो यस सर ओके पढ़ी को बाटी आसीबो हां श्वेता वेरी गुड बेटा ओके संकेतिका वेरी गुड एवरीवन जो माने आसुजो घंटे टाइम दोजो प्लीज गो फॉर इट स्टडी पढ़ी के जाओ पिला माने ओके आई थिंक क्वेश्चन पचाला पर किसी जणा पिला लीव कर जाउ जंदी ओके दे आर चीटिंग themselves okay they are cheating themselves they are not cheating me they are cheating themselves okay so when you will fail to get a seat in the entrance exam if it will in your any desired college okay it may be engineering ground it may be in your medical ground it may be OUAT or anything else okay so when you will fail for that purpose then you will feel okay that क्या प्रॉब्लम था वहां पे अब पढ़ नहीं रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं सर तो हम छुप रहे हैं उनसे ठीक है हमें लुचु जुता कोडू पचाला हमें लिफ्ट कर जाउचो ओके तो जेतबेले निजे जेतबेले कैरियर फेल हे गले तळे दे विल फील दैट कि सारे एमडी कहउतला ओके देखो we can do anything so in the given question okay question ने तमानो कोन देछि एंथैल्पी चेंज दे देछि एंट्रोपी चेंज देछि तो एंथैल्पी चेंज पिल्ला माने केते देला what is your delta h enthalpy change माने कोन delta h it is equals to 40.63 kilojoule mole inverse and what is your entropy entropy means delta s is equals to 108.8 joule kelvin inverse mole inverse ओके तो पिला माने एटी गोटे जूल अछि गोटे किलो जूल अछि समस्त गोटे यूनिट को आनिया को पड़िबो तो मु किलो जूल टा को जूल को कन्वर्ट कर दबा एटी so 40.63 into 10 to the power 3 joule mole inverse केते आसे बाबा 40630 ओके joule mole inverse एति गला हमर डेल्टा h मोर टेंपरेचर देछि केते 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो फर्स्ट you have to convert it into your kelvin by adding 273 to it okay so it will be 300 in kelvin 300 kelvin तो वर्तमान कोन पचार जी feasibility of the reaction तो पिला माने सिंपली तमन को एठी
free energy change बा gives free energy change बाहर करिया को पड़िबो. So delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, so सबुरो value दे दिया जाइछि तम मानको. So delta is your 40630 minus T delta S, that is your 300 n into delta S केते 108.8. 40630 and then minus 300 n into 108.8. पिला माने देखिलो आंसर तमर केते आछि. I think it will come 7990 joule mole inverse. एतिक आछि आंसर 7990 joule Yes, sir. mole inverse. तो पिला माने मोर डेल्टा जी टा एतिक बाहरला एवं तार साइन टा होछि मुख्य कारण एठी मते क्वेश्चन रे फिजिबिलिटी पचाछि. तो डेल्टा जी रो साइन एठी कोन अछि? It is greater than 0 or less than 0? Delta theta more it is positive Greater than zero. greater than Greater 0. than 0. Okay, so delta theta is greater than 0. Delta theta tomorrow it positive hela to reaction na kon hobo? Non spontaneous. Are correct or not? Delta theta kon hejibo? Non spontaneous Yes, na sir. spontaneous? Non spontaneous. Non spontaneous. Non-spontaneous. Feasible na not feasible? Not feasible. Not feasible. Not feasible. Not feasible. Okay, not feasible. Okay, if it is a non-spontaneous process. Okay, but write down the next question. Write down Sir. the next question. How it is? तो ठीक feasible टा ठीक कौन आथरे कोटे कोड. Feasible माने होची reaction टा हबो कि न हबो. Spontaneous कि non-spontaneous. ता मनो को मनो हबो जदी ता माने सेटा हला feasible. तो तू चेक करिवु तोर डेल्टा जी रो वैल्यू टा जदी पॉजिटिव आछी कि नेगेटिव आछी से अनुसार तू चेक करिवु तोर सिस्टम टा spontaneous हबो कि non-spontaneous हबो. जदी spontaneous हला then it will be your feasible reaction. जदी non-spontaneous हला then it will be your not feasible reaction. बुझिलु? Okay, write down the next question. Question number 2. At 0 degree centigrade, ice and water are in equilibrium. Ice and water are in equilibrium. Ice and water are in equilibrium. And delta H is equals to 6 kilojoule per mole. 6 kilojoule into mole inverse. For the process H2O solid converted to your H2O liquid. What will be the delta S? What will be the delta S and delta G for the conversion of ice to liquid water. At 0 degree centigrade and ice and water are in equilibrium and delta G is equal to 6 kilojoule per mole for the process. Water ta tor solid or liquid. What will be the delta S and delta G for the conversion of ice to liquid water? Okay. कौन कहि पिला माने क्वेश्चन कौन कहला तुम मानकू देखो कौन कहि at 0 degree centigrade ice and water are in equilibrium. Ice और water परस्पर प्रति equilibrium रे अछंती. Delta S ता होची तमरा 6 kilojoule per mole inverse. For the process water solid to water liquid. बर्फ ता तमरा पानी को कन्वर्ट होची. ओके, ice यहाँ पे आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. देन पूछ रहा है कि डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा G क्या होगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ द आइस टू लिक्विड वाटर. अब अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैं कर दोची बिकॉज़ टाइम टिका जेबा अछि लागि कि नोट क्लास असतो मते सारी ऊपर दिए कर दोची. नेक्स्ट क्लास त मानु देबी नेक्स्ट कांसेप्ट पढे. ओके देखे सॉइल सर हां किछि प्रॉब्लम ना देख टेंपरेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड अछि. ओके सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 273 केल्विन. ठीक ना नहीं 0 Yes, sir. 273 that is your 273 केल्विन. सेही टेंपरेचर रे तोर आइस और वाटर परस्पर प्रति इक्विलिब्रियम रे अछंती. ता माने वाटर ता जेतोले सॉलिड रू बा तोर आइस ता जेतोले तोर वाटर को कन्वर्ट होजी साने परस्पर इक्विलिब्रियम रे अछंती. ता माने प्रोसेस ता तोर इक्विलिब्रियम रे अछि. हां तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस पई तोर डेल्टा जी टा कोन हबो 0. डेल्टा जी रो इक्वेशन कोन डेल्टा H minus T delta S T delta that is S. equals to 0. So delta H is equals to T delta S. Delta S ता T delta S हबो. Sir
अच्छा पिला मन देखिलो क्वेश्चन में तुमको टेंपरेचर देजी 273 केल्विन तुमको डेल्टा एस दे दिया जाईची 6 किलो जूल दैट मींस 6 into 10 to the power 3 जूल मोल इनवर्स बा तुम किलो जूल में मध्य करि पारो किछि प्रॉब्लम नाही तो तुम एठी डेल्टा एस टा बाहर कर परिबोनी डेल्टा एस टा कोन हबो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय टी 273 ओके और टेंपरेचर वैल्यू पकेबो हला डेल्टा एस तो रहेगा केते एठी 6000 joule okay per mole divided by 273 and your answer will be 21.9. Yes, sir. nearly equals to 22 joule kelvin inverse mole inverse okay joule kelvin inverse mole inverse बुझियला Yes, सब sir. बेले क्वेश्चन जतो बेले तमरा फ्री एनर्जी रो पचारती सब बेले मन रखिबो यूनिट सेम हवा दरकार योर यूनिट शुड बी सेम डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस समस्तंकर यूनिट सेम हवा दरकार बुझियोची तापर तमे देखिबो डेल्टा जी रो साइन कोन आछि नेगेटिव आसले कोन हबो पॉजिटिव आसले कोन हबो जीरो आसले कोन हबो ऑलरेडी कहि दिया गला ओके तो पिला माने एटी गोटे जिंस लास्ट को टिके नोट करिया कहिबी त माननकु जे मोर जो रहिला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस if the system is in equilibrium then delta g is equals to 0 then jodi delta zeta is tomorrow 0 hala then delta h is equals to t delta s then temperature T will be equals to delta H divided by delta S पिला माने जो टेंपरेचर टा को आ जाए इक्विलिब्रियम टेंपरेचर बुझि पालो ए टेंपरेचर टा कोन को आ जाए इक्विलिब्रियम टेंपरेचर ओ टेंपरेचर रे तमरा सिस्टम टा इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करिवो जदी पचारि थिबो तबे तमे डेल्टा H एंथैल्पी चेंज एवं एंट्रोपी चेंज को डिवाइड करिकि तमे बाहर करि परिबो ओके पचारि थिबो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर ओके इक्विलिब्रियम टेंपरेचर रे तमरो डेल्टा H दे देथिबो तम सॉरी तम डेल्टा H दे जाइथिबो मु क्वेश्चन करैबी तमर सेठी इक्विलिब्रियम टेंपरेचर टा तमको बाहर करियो पड़िबो बुझियोजी या पर ଗୋଟେ क्वेश्चन अछि राइट डाउन द क्वेश्चन ଗୋଟେ क्वेश्चन लेखो देखिबा पढाउ जदी सार दवा नले लेखो a plus b give rise to c plus d your delta H is equals to minus 10,000 joule mole inverse delta S is equals to minus 33.3 joule mole inverse Kelvin inverse okay then write down the first option mane first question ta lekho at what temperature at what temperature at what temperature at what temperature the reaction will occur spontaneously the reaction will occur spontaneously from left to right okay from left to right then second question like at what temperature the reaction will be reversed at what temperature the reaction will be reversed a plus b give rise to c plus d delta is equal to minus 10,000 delta s is equal to minus 33.3 question dala at what temperature the reaction will occur spontaneously from left to right at what temperature the reaction will be reversed question likhila samaste yes sir okay question likhila bujhi palla question kon dizki bujhi palla anyone ye bujhi palla question ko अरे हां कि ना कहि देले मु कहिबी ना बुझि पालो तो क्वेश्चन टेटे कहि दियन सर ओके क्वेश्चन बुझियलानी दिस क्वेश्चन इट विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग क्लास ओके क्वेश्चन आम मन पकेबो सेट पे क्वेश्चन लिखि छाड़ देली मते मन पकेबेटा जे सर कहबार थिला ओके ठीक अछि पिला माने गोटे कहि देउची गोटे नोटिस अछि तमरो बुधवार दिन क्लास रहइबो तापर जो शुक्रवार ना कोन गोटे क्लास जो अछि लास्ट दीटा क्लास तमर चारटा क्लास रहे फर्स्ट नेक्स्ट क्लास तो तमर थर्मोडायनामिक्स रहइबो last data class of this week it will be your doubt clearing class so anyone having any doubt please put a particular serial mark a chapter a doubt any numerical anything please make a note type okay gote khata re likhi dabo likhi dabo pdf format karikina give your name and send it to my personal window okay didin achi doubt clearing class tamana doubt